Namaskar, this is Veenu from Unique Zone Real Estate and he is Vikas Verma from Damac Properties and from Nainital. आज यूनिक जोन की पूरी फैमिली डमैक के नए ऑफिस आई है, डमैक लगून्स के नए ऑफिस, एंड वी आर रियली हैप्पी टू सी योर ऑफिस विकास. You're most welcome. थैंक यू सो वेरी मच. और आज हम विकास भाई से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे इन रिगार्ड्स टू न्यू ऑफर्स, न्यू लॉन्चेस, बिकॉज माय क्लाइंट्स, माय इन्वेस्टर्स, माय एंटायर यूनिक जोन फैमिली हैज़ बीन वर्किंग विद यू फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स. और जो भी सजेशंस आप देते हैं हमें, हमारे क्लाइंट्स को, जिस तरीके से हमारे क्लाइंट्स को आप एंटरटेन करते हैं जूम कॉल पे खासकर, आई थिंक वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू. वी आर रियली हैप्पी द वे you have ensured कि हमारे clients सही properties लें with our guidance. और my senior members, Mr. Bakar, Mr. Fahad, Ms. Chanchal, they all are here. They all are very, come Chanchal, they all are very excited. Fahad, come, they all are very happy to know the way you have been telling all our clients. आज हमें आपसे बहुत कुछ और जानना है, तो आप प्लीज़ हम सबके questions का आंसर दीजिए. Ms. Chanchal, over to you. Thank you. So we are hearing a lot about the Damac Riverside Lagoon views. तो आप मुझे बताएंगे उसमें क्या ऑफर्स चल रही हैं अभी हमारे क्लाइंट को क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? रिवरसाइड एंड लगून व्यूज दोनों ही जो कैटेगरी है ये अपार्टमेंट्स की कैटेगरी है, एंड दैट टू लेके थोड़े स्पेशल हो जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट स्टैंड अलोन बिल्डिंग. तो इस कैटेगरी की जो सप्लाई है मार्केट के अंदर, दैट इज डेफिनेटली लिमिटेड कंपेयर टू अ स्टैंड अलोन टावर. तो इस हिसाब से दोनों प्रोजेक्ट जो है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इस टाइम पे बहुत अमेजिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं. लेकिन जब आपने मुझसे ऑफर की बात की तो हमें इन्वेस्टमेंट को समझना है थोड़ा सा. अगर आप रिवर साइड को ऑप्ट करते हैं तो उसमें जो उसका कंप्लीशन है दैट इज इन मार्च 2029. सो वी आर गेटिंग मोर टाइम टू ग्रो द मनी. एक्चुअली लॉजिकली अगर हम देखते हैं तो इसमें इजी पेमेंट प्लान 1% पर मंथ के हिसाब से आप जा रहे हैं, लाइक यू नो दैट, एंड देन यू ग्रो द बेस्ट ऑफ द ROI विद द टाइम. बट लगून व्यूज जो प्रोजेक्ट है वो दैट इज गेटिंग कंप्लीट बाय अप्रैल 2028. नाउ हियर वी हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू. तो यहाँ पर क्या है कि पहला तो है द पेमेंट प्लान वेयर यू आर गेटिंग 60-40 payment plan. So by the time the entire community is ready, your apartment is ready, all amenities are ready, you have paid only 60% from your pocket. On top of that, currently we are offering you 4% Dubai Land Apartment. Yes, sir, of course. Yes. So we'll take care of that, definitely. So but हाँ, the challenge is we are having very limited inventory for that. Definitely हमें एक अच्छे प्राइस पे और अच्छी यूनिट ही ग्रैब करनी है उसमें to grow the maximum profit. तो दोनों के केस में जो है डिफरेंस है. बट हाँ, रिवर साइड we are getting benefit of time. But in Lagoon Views, we are getting benefit of this 4% DL waiver and the payment plan. Both the things. So both are amazing. चेल्सी के बेसिकली 2 बेडरूम का बायर है चेल्सी के लिए, और उसको फ्रंट फेसिंग का यूनिट चाहिए बिल्डिंग C में. क्या हम ऑफर कर सकते हैं? चेल्सी अपने आप में कितना लग्जरी प्रोजेक्ट है. इज अ स्टैंड लाइक सिंगल लोडेड टावर, राइट? सो आप कुछ भी खरीद रहे हैं आपको 100% यू आर गेटिंग C view only. There is no balcony at the back side. ओके, Logically. टोटल हमारे पास A, B एंड C टोटल 3 बिल्डिंग है, करेक्ट? नहीं, हमारे थोड़ा पास सा देखा जाए, correction हाँ, करता मैं हूँ. आपको एग्जांपल देता हूँ इसका. सो आप चेल्सी को पहले 2 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे, चेल्सी A एंड चेल्सी B, ओके, राइट? और दोनों में 3 बिल्डिंग है. ओके. सो चेल्सी A टावर 1 2 3 ABC हो गया, ABC एंड चेल्सी, हाँ, चेल्सी 2 में भी टावर ABC. इस तरह से है. तो टोटल 6 टावर्स आप कहेंगे, जिसमें दोनों साइड में जो है 2 टावर कनेक्टेड है, ओके, राइट? सो A एंड B कनेक्टेड, A and B connected, C standalone, C standalone. तो इस तरह से डिजाइन. So, what are the categories of the townhouses and the villas? Personally believe like it's an opportunity because when we had a launch of the Mac Island 1 phase 1, first day of launch, like in 10 hours time, more than 10 billion dirhams inventory was kind of booked. So this such a like great investment opportunity. Again, we are getting that opportunity right now. So people are that much aggressive that we have already received a lot of EOIs in advance. Now the category what you are asking me, what we are releasing right now is like 3 options only. One is a 4-bedroom townhouse. Those are definitely a middle unit townhouses. 4-bedroom. 5-bedroom are corner townhouses, right? All corners are 5-bedroom townhouses. And there is one more category of 5-bedroom, which is we call twin villas, right? So twin villas like 2 5-bedroom connected to each other, open garden from both the side, exactly. So these are the things. So the price range will be around like 3 million for 4-bedroom, 4 million around 5-bedroom, and then 4.5 million around for the twin villa. Like, right. so, yeah, it is indeed, because there is nothing available So right now now. we are just collecting EOIs. Yes, of course, correct. And then like it's very aggressive. So please tell your investors do not delay, because chances of getting units will be very low otherwise. All right.
So because as you knew that we went to Delhi for the road show, and majority of the client is still looking for investment close to downtown. They don't want to go to the outskirts of Dubai land, and they don't want to go to the south. They need something within the city periphery. So what do we have? What are the offers? Canal Heights and Canal Crown. Business Bay. Yeah, in business, within Business Bay, and that too, like in Business Bay area, if you see two very premium location, people call it exactly. Either you are inside the downtown area or bang at Canal with a canal view. In fact, like if you have a close look at Canal Crown, canal view, water view, on top of that you are having skyline, Burj Khalifa view as well, right? So those are very beautiful apartments. Actually, I think you should consider when you are putting your money, this much money investment for the What are the investment of offers premium for our locations. clients then? See, right now, like we are having the for Canal Crown, we are having the promotion for the 4-bedroom, 4% DLD waiver. Yeah. For my Nigerian clients, what best can I offer to them? In this case, if you consider like, do they have any specific requirement, like anything special they are looking at? Because Venuji was telling me some people are looking for some water view or something. Yeah, they want water view because they like relaxing. Water view apartment, they are convinced that they can get a lot of profit out of it. That's great. See, I'll tell you one thing, Lily. Dubai real estate almost started from 2002. Right, and Damak as a developer is they're in the market since 2002 only. So we have variety, you know, that like from a small ticket size to bigger ticket size as well, right? So that depends, like, you know, that what kind of investment opportunity or the personal use client is looking, and then I think like we can cater all of the requirements right now. So now I think the best way of doing it, we'll sit one by one with each and every client's requirement, and then I'll personally suggest you which project suits which client better exactly. Although there are a lot of options, right? But for investment, every investment cannot be a good investment all the time, right? There is a perfect time to grab that thing. And number two, for the end user, we need to consider the emotions as well. What they are looking for the family. There are some people, they love to stay in a standalone tower, you know, they're packed with an apartment. Or some people, they love to go outside enjoying some gated community lifestyle, amenities and all. Based on the requirement, we can definitely suggest a lot of options for this. So Vikas bhai, I have a lot of investors from Delhi, and what I've seen is there is a trend for golf course communities, DLF and all of that. And Damak has also done a golf course community, Damak Hills one. Yeah. But this time around, I think we have a different feature. So I would like to know how it's beneficial for the yield and how it's beneficial for my clients. I'll tell you one thing, golf lovers are golf lovers. You cannot beat them. If somebody is looking for these golf amenities and they are like kind of big fan of golfing, so definitely we have a very amazing project for you, which is like a golf gate, right? So these are the like very lavish and luxury residential towers, and then 100% facing the golf course. Right, these are again like a kind of a single loaded tower, so we don't have any balcony at the back side. So you close your eyes and buy anything, you will get 100% golf view. And then not only the golf view, you can like a lot of amenities within the building you will enjoy related to golfing only. You know, that short put golf, balcony golf, like but sky golf I and think all. in the newer communities, Damak has replaced the golf feature with the water. Oh, new community. Okay, fine. New community. That's a nice idea. See, there was a time in Dubai, I personally believe a lot of developers, they were creating golf communities. Right. Slowly we started shifting towards the amenities. Almost every developer is doing same. Like, you know, that we started giving this park amenities, sports grounds and activities, and maybe like some big developer is offering you Max's or shopping mall inside the community. Right. Correct me if I'm wrong. Exactly. So this is working definitely, because like for an end user, if I'm living with my family, my kids or my parents, so we believe like, you know, that amenities should be in reach Of course. instead of golf course, and because Lifestyle everybody is not is going as to important as everybody is not going to play golf, right? Exactly. So these kind of properties are giving you very good ROI as well, and then are in demand. So slowly that pattern is moving, and now there is one more step added to that. Exactly, that is something like more luxurious and like some special lifestyle, which is like right now, like I believe like all big developers are focusing on the water theme based theme, lifestyle. right. So this is how it is Exactly. going, slowly moving towards lagoons and then like water theme based lifestyle, and which is giving very amazing result. If you see past 5-7 years, people invest in townhouse and villas. Everybody made like a very good ROIs. Right. Okay, that Thank I you think so that much. answers my question. Thank you so very much. मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। जैसे हमारे पाकिस्तानी बायर्स हैं, वो ज़्यादा पसंद करते हैं विलास में या बड़े मेंशंस वगैरह में, क्योंकि वो यूज्ड टू होते हैं
उधर के हिसाब से, तो उन्हें हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं विलास के अंदर या बड़े टाउन हाउसेस के अंदर? इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने आपको कहा कि वैरायटीज आते हैं, सो इसमें काफ़ी ऑप्शंस हैं। बेस्ड ऑन द बजट हम लोग उस पर टैकल कर सकते हैं इस चीज़ को। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम थोड़ा छोटे से साइज से शुरू करते हैं, अगर जो है जिसमें कि मैं ट्विन विलास की अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, अराउंड 4.5-5 मिलियन के एवरेज प्राइस के अंदर आपको एक बड़े साइज का एक स्टैंडर्ड लाइक सेमी डिटैच विलास वहाँ से शुरू करते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी है, बट लाइक यू नो दैट इफ यू सी इन द मार्केट राइट नाउ नोबडी इज हैविंग दिस। इस कैटेगरी में कुछ भी अवेलेबल नहीं है ऑफ प्लान तो असल में। तो अब नवंबर में इसका लॉन्च है, तो लाइक यू नीड टू बी लिटिल एग्रेसिव टू डिपॉजिट योर ओआई फर्स्ट, कि जो है पहले से मैं ओआई डालूं और जो है मुझे चांसेस उसमें थोड़ा इंक्रीज हो जाता है कि लाइक मुझे यूनिट मिल जाएगा। बट एक और चीज़ है इसके अंदर जिसमें एक बड़े सेगमेंट की हम बात करते हैं। इसके अंदर जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास में ऐसे ऑप्शंस में इसमें 17,500 स्क्वायर फीट अराउंड बिल्टअप एरिया के साथ में लैविश मेंशन आई मस्ट से एक्जैक्टली राइट, जिसके अंदर आपके पास में अपना प्राइवेट सिनेमास हैं, प्राइवेट जिम है, सोना, स्टीम, जकूजी, इवन लाइक रोटेटिंग कार पार्किंग, द हाइड्रोलिक रोटेशंस, तो वो सब चीज़ें भी हैं इसके अंदर ऑप्शंस हैं। बट डेफिनेटली हम एक काम करते हैं कि इस तरह की जो इन्वेंट्री है मैं आपके साथ शेयर करूंगा एंड वी कैन हैव अ जूम कॉल विद द क्लाइंट, और मे बी अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं इट्स बेस्ट सो दैट दे कैन कम एंड बिकॉज वी डू हैव अ शो विला एज वेल फॉर दैट, सो आप आकर के उसको देख सकते हैं। ठीक है। और मुझे एक और चीज़ पूछनी थी कि जैसे अभी रिसेंटली लॉन्चेस वगैरह हुई हैं, उनकी प्राइसेस ऑफ प्लान की थोड़ी कम है। अभी जो हैंडओवर हो रहे हैं वो तो ऑलमोस्ट आपके डबल या डबल से भी ट्रिपल प्राइसेस हो चुकी हैं। तो कितना डिफरेंस आएगा जो न्यू लॉन्चेस के अंदर रिसेंटली जो आपने लॉन्च किया उसके अंदर और न्यू लॉन्च के अंदर ऑफ प्लान में अगर हम जाना मतलब खरीदना चाह रहे हैं, अगर क्लाइंट्स हमारे इंटरेस्टेड है ऑफ प्लान में, तो कितना डिफरेंस आएगा प्राइस का? देखिए हम जो अभी पास्ट कुछ सालों से देख रहे हैं, जो ट्रेंड देख रहे हैं, उसमें हमने एक चीज़ नोटिस किया है कि जो है जो कैटेगरी टाउन हाउस विलास की है, सो इट्स नॉट ह्यूज अमाउंट ऑफ द टाउन हाउस विलास अवेलेबल इन दुबई। अगर हम देखते हैं जो स्टेट्स ये कहते हैं कि लगभग अराउंड लाइक 45% तो अपार्टमेंट्स हैं, ओनली 15% जो है टाउन हाउस विलास हैं अवेलेबल दुबई के अंदर। तो कैटेगरी ऑलरेडी जो है सप्लाई एंड डिमांड सप्लाई के रूल के हिसाब से शॉर्टेज में है। तो अगर हम देख रहे हैं कि पिछले 5-6 साल में जिसने भी इसमें इन्वेस्ट किया था ऑफ प्लान इन्वेस्टमेंट में, जो कि अच्छी बड़े डेवलपर्स के साथ में है, उनका जो एवरेज आरओआई के केस में, अगर वो लोग जिन्होंने 2 साल तक होल्डिंग कैपेसिटी रखी है अपनी असल में, दे क्रिएटेड ऑलमोस्ट लाइक 80 to 120% ऑफ आरओआई। मतलब जितना उन्होंने डाला उसका वो इतना बना पाए वो लोग। बल्कि यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि मेरे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं दमाक के साथ में जिसमें पीपल हैव मेड लाइक अप टू 200% ऑफ आरओआई। ये भी क्रेजी है, ये भी क्रेजी नंबर है। मतलब किसी को हम समझाएंगे तो शायद उसको वैसे समझना है, बट लाइक इट्स लाइक रियल रियलिटी जो इसमें आपको टाइम, प्रोजेक्ट टाइम और जो उसके प्राइसेस के साथ में गाइड कर सकता हूँ। बट लाइक एज ऑफ नाउ, ठीक है ना, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी टू गेट द सेम आरओआई, ये आपका सवाल था। तो देखिए हमने एक पैटर्न नोटिस किया अगर आपने कि किसी भी जो भी कोई नई गेटेड कंपनी दुबई के अंदर लॉन्च हो रही है, असल में उसमें पहला फेज जो लॉन्च होता है उसमें किसी को भी कोई यूनिट मिली है, कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन सी लोकेशन है, कौन सी यूनिट है, क्या साइज है, क्या प्राइस आपने पकड़ा है, इफ यू आर लकी टू गेट अ यूनिट एग्जैक्टली, सो बाय द टाइम जो प्रॉपर्टी जो है, जो कम्युनिटी है वो फिनिश होती है आपकी या फिर जो है डेवलप होती है, देन दे मेक द मैक्सिमम प्रॉफिट लॉजिकली अगर आप देखते हैं तो ये हाँ करेक्ट। तो ऐसे केस में जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है कि अभी जैसे नया जो कम्युनिटी दमाक लॉन्च कर रहा है, दमाक आइलैंड 2 के नाम से, उसके पहले फेज पर अगर आप कुछ भी आपको मिलता है, सो यू विल बी मेकिंग द मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ इट। तो ये मैं कुछ एग्जैक्ट नंबर नहीं बोलूंगा, बट हाँ डेफिनेटली ये चीज़ है कि जो है कि जो नंबर्स हैं दोज आर अमेजिंगली हाई, राइट। So Vikas bhai, we have some new joiners. I want you to give them, how do they go about the market. So I want Manpreet, Fatma, Aftab and Zuhaib and Umair to come and join us. Please guide them, what they should do for selling. Hi Manpreet. Hi Fatma. I'm glad to meet you all. Thank you so very much for coming here. What I'll suggest you right now, like it's a very good market right now. Okay, I personally believe like you are sitting in the correct place in your lifetime. Okay, one advice, try to focus on relationship first. There are a lot of things in the market. Okay, a lot of opportunities are there. There are people, they are looking for only good information, correct information and good information. And I believe like that Unique Zone is known for the relationships only. Absolutely. Okay, and then like you will see the magic. It will start from one person and it will multiply, right? This is how it happened. The good part is this, you guys are working like that having an opportunity that the Mac is giving you all kind of varieties, that for the small ticket size to bigger ticket size as well, right? We can take care of the each and every requirement what clients are looking for, right? So initial level definitely we are here to support you with the information only, okay? And then slowly when you will start meeting and then sit in some attend some meetings, exactly you will understand
understand like that how the process goes and how investments are working over here. And rest like Bakar Bhai is here, of course. Like So guys, that if you have any we can keep question, meeting. you can ask Vikas by now. and Yeah, then we you kind of can reach me process. anytime directly. Okay. So in Ask some case question. So, Mr. Vikas, I have a very common question. So Sure. many developers are there, right? So why the Mac? very nice. Because every clients are asking me the same question. That's why I'm asking. Right now at your position where you're sitting, it's not necessarily have to be the Mac. Understand this. Yeah, understand. Right, because I think like you're trying to work your hard, give your best as per the client's requirement. There are possibilities that what your client is looking for something. Let's suppose your client is looking for a 400,000 dirhams a studio ready to move in to buy. I don't have that, right? So as I've told you, like the first priority is the relationship with the client. But yeah, definitely the Mac, just try to understand like it was 2002 when Dubai Real Estate started. Since then Emaar is there, the Mac is there. They're the very big developers of Dubai. Start focusing on them, right, and see what opportunities are there, because you know that if you're talking about investments, so investments is all about opportunities. Otherwise retail inventory, we have a lot of inventories in Dubai, right, and every product cannot be a good investment all the time. That comes and goes, right? People are not leaving it. Dubai is a small place, you know that, and but entire world is investing right now to Dubai. So with the benefit with the Mac is like being the old and the biggest private luxury developer of the region, exactly. So we are having kind of varieties for you. You talk about the, like if you see past couple of years, we have more focus towards the luxury segment of the lifestyle. You know that because sometimes house is not house, it is lifestyle. For what people love to pay you high, logical, right? This answer. Thank you so much. And thank you so very much, everybody. We will be constantly giving you these kind of videos, informative videos with our Vikas Bhai, so that koi bhi questions ho in future mein, you can always contact, especially our international clients. Please do contact us through Zoom, and Vikas Bhai is always there. We all are there to answer all your questions. Thank you, Vikas Bhai. Thank you. Thank you so Thank you, much. everybody.